Honorable Speaker, to giving me opportunity. Sir, my name is Basuraj Bommai, not S.R. Bommai. S.R. Bommai is my father's name, and you are very well acquainted with that. That is I have Sir, remembered it. I also want to thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister to having presented this 26-27 finance bill. Sir, this finance bill has not come out of nothing. Sir, ये जो finance bill आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत है सर. सर, डिज़रेली ने बोला है कि there is no magic in economics, only results. And results are there to be seen. सर, ये जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री बन गए तभी इकोनॉमिक्स इतना बुरा हाल में था कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ रिपेयर करे, कहाँ क्या करे. इतना बुरा हाल था कि इन्फ्लेशन डबल फिगर पे था, इकोनॉमी सिंगल डिजिट पे था, इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे था, फ्रजाइल फाइल में था और इकोनॉमिक्स में 11th रैंक पे था. वहाँ से चालू हुआ, जीरो लेवल से उन्होंने किया है. पहले रीबिल्ड किया सर, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को दोनों मिलके रीबिल्ड किया, देन रीइंफोर्स किया, अभी रिफॉर्म कर रहे हैं. अभी जो रिफॉर्म्स आया है इसका बैकग्राउंड ये है कि 11 साल का कड़ी मेहनत है, डिसिप्लिन है और लोगों ने उसको रिस्पॉन्स किया है. सर, जो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ पैसा से नहीं होता सर, ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ से होता है और क्रिएशन ऑफ वेल्थ कड़ी मेहनत, लोगों की कड़ी मेहनत से होता है. बॉटम ऑफ द पिरामिड जो लोग हैं वही मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है सर. हम यहाँ जो बैठे हैं यही समझते हैं कि हम इस देश का तकदीर बदलते हैं. असली तकदीर वो बदल रहे हैं जो धूप में छाँव में कड़ी मेहनत करते हैं और इस देश को बनाते हैं सर. यहाँ से रोड सैंक्शन कर सकते हैं लेकिन रोड बनाने वाला जो है उसका कड़ी मेहनत है सर. एंड दैट लेबर सर, the sweat of the labor and the blood of the farmer combines together to build the nation sir. सर, पॉलिसी पैरालिसिस था, कुछ चीज पे कोई निर्णय नहीं होता था, उसको छोड़ के अभी डिसिसिव गवर्नमेंट आया है सर. और मैं इतना ही कहता हूं कि विजनरी एक प्राइम मिनिस्टर अगर आ गए तो कैलामिटी को कैसे अपॉर्चुनिटी बदल सकता है ये हमारी सरकार ने दिखाया है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने दिखाया और हमारा प्रधानमंत्री ने दिखाया सर. सर, कमिंग स्ट्रेट अवे टू द यूनियन बजट सर, इन लोग जो भी कहना है उनको कहना चाहिए, अपोजिशन में है, लेकिन इन लोगों ने पूरा खजाना खाली रख के रगे गए थे. अभी वो करना चाहिए, ये करना चाहिए जो बता रहे, अभी कहने के लिए लायक क्यों हो गया कि मोदी जी ने इसको सही रास्ते पे लेके आया. सर, हमारा ये बार our expenditure has grown to 7.7% sir, compared to the last year, and our receipts are also going more than 7% sir. And our GDP growth with inflation is estimated to be 10% sir. A double digit GDP is expected this year sir. And our deficits, physical deficit has come down from 4.4 to 4.3 sir. Sir, now the whole situation is changing in last 1 month sir. Our Honorable Prime Minister has made a statement on the Gulf War today.
it has got a lot of repercussions on the lives of the people throughout the world and within the country also, sir. And he gave elaborate arrangements what he has done. Sir, I want to remind that during the Iraq war, Iran-Iraq war and US-Iraq war, within 3 days, there was long queue in petrol bunks, sir. We have suffered a lot. Kilometers, petrol bunks were long queues were there. Now, the war has entered 22nd day, but there is no queue in petrol bunks. Why? Because we have increased our capacity in 11 years. We have increased our processing capacity. We have and the goodwill of Modi ji, we are able to get our crude oil in time and save the hardship to the people, the common people, to the economy of this country. Sir, if you look around all the other countries, what's happening? They are in total mess. They are called holidays. The life has stopped there. But no life has been stopped, sir. No economic activity has been stopped. Certain portion of LPG are in problems. I understand, but that is also going to be eased out now. Thanks to the able administration and diplomatic efficiency of the government and Modi ji, the goodwill of Modi ji, sir. In these circumstances, what should have been done? And what is the repercussion? And how much money more we require? That is the challenge before us, sir. Sir, it has been estimated by the Finance Committee itself that we might need 1 lakh crore more so that we can face all this kind of a crisis. And it has come to my notice, and I am sure while replying, Honorable Finance Minister will say that how much money she is ready to keep to face this crisis. And I am very much sure, because during COVID, we have seen much more bigger crisis. And during COVID, sir, states were taken care. The GST compensation was taken care. The migration workers were taken care. Food was taken care. Health was taken care. Vaccination was done. This speaks volumes of the government, and the test of the government is in crisis, sir. When there is a crisis, then the ability of the government and the leadership is under test. And I am very proud to say that in all the difficulties, in all the situations, Modi ji ability has come to the rescue of the people of the common man, sir. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.